problem, which is where we can evaluate what is the general solution of that non-homogeneous system of equation. Okay, so okay, so I think 36 students are connected now. Okay, तो जैसे आते जाएंगे मैं कनेक्ट करता जाऊंगा. So basically there is some theorem, or you can say this is basically result. Okay, so this is not a theorem. This is okay. So here yesterday we have calculated this fundamental matrix for the system, which is already we have assigned that is equation number 1 for x belongs to that given interval, and where we have this n, which is defined by that is I think equation C or D. I think equation C. Okay, so so this is a solution. This is a solution of you. This is solution of the solution of your initial value problem, and that is defined like y prime axy plus bx. Okay, and where the initial condition are given, which is suppose this is equation D. Okay, so uh, if you assume that what is your y, if we know this is yh, which is the uh, solution for homogeneous. So this be the solution of homogeneous initial value problem. So so you know that what is your problem is for homogeneous, that is simply this thing here, bx term is 0. Okay, so this is your initial value problem, and this yh be the solution of this system of homogeneous linear differential equation. So where this is x, and x naught of course belongs to that interval I. Okay, so suppose this is your equation number, suppose E. Okay, so then uh, basically what is the consequence of our theorem? So the theorem is basically what is nx. So nx is this is the yh, this thing, this is the, you have to find what is the solution for homogeneous one, and then plus this is mx, x naught to x m prime s ds ds, where x belongs to I. This is equation number so f. So this is basically this is solution of this is solution of your y prime that equals to axy plus bx, where the initial condition is something constant c. Okay, so this is your solution. Okay, so here what is y nx is simply your this is your general solution. Okay, this is your general solution. So this portion we have already did in previous class. So here the next one. So what is the fundamental theorem for linear ordinary differential equation? So okay, so for that, in next page, the fundamental theorem for
linear differential equation. Okay, so if you suppose this A be the matrix which belongs to that set, which is the real matrix, okay, of n cross n order. So and say y0 be any column vector which belongs to Rn. So this is your column vector. So the unique solution of initial value problem. Okay, so before that we have to okay. So what is your differential equation? Okay, so of the initial value problem, and say what's your initial value problem. So if we this is your initial value problem. So what is initial value problem? So if we consider so here we can write your initial value problem, and which is defined like dy over dx that equals to y dot. This is ay where x belongs to R. Okay, this is equation number one. With an initial condition, and if this condition is y0 is equals to y0, where this y0 is belongs to R. So suppose this is your initial value problem. So this the unique solution of this initial value problem is what is the solution of this? So the solution of this is given by this yx that equals to e to the power ax and y0. So this is the solution of this initial value problem. So ये portion तो already हमने एक दिन discuss भी किया था. Okay. So what is the proof? Proof is in 2 or 3 lines. So here, so if yx is e to the power ax y0, so then what is the d over dx? So d over dx is this equals to y dot, and if we differentiate that, so this equals to this thing. Okay, and here if we write this term, okay, so in that way it or ex y0 that equals to this is yx from this portion. Okay, so here you see that what is the, if we put initial condition, if we putting y equals to 0 here, so y equals to 0, so this becomes if y equals to 0 here. Hello. Okay. Yes. So equation first में sir dy by d is equal to y सर नहीं समझ में आया. Y dot है, this is y dot. Okay sir. Okay. Y dot. वो थोड़ा छोटा बन गया वहाँ. तो विजिबिलिटी की इशू है वहाँ थोड़ा. ओके. Okay, so here putting x equals to 0, this becomes 1. So this is y0 equals to y0. This means this satisfies this condition. So y0 means y0, this satisfies this condition too. Okay, so this means this e to the power ax y0 for ax y0 is a solution of the initial value problem, which is defined by equation number 1 and 2. Okay, so and by Picard's theorem and by the Picard's theorem of uniqueness, by Picard's theorem, this yx equals to the power ax y0. This is
unique solution of your initial value problem 1 and 2. Okay, so basically, here, what is the fundamental theorem? So this is if the system of linear differential equation defined by this with initial condition this thing, then the solution of this initial problem is given by this is a unique solution, and that solution is yx is given by e to the power ax y0. Okay, so if we take a problem which is depends on this fundamental theorem of linear ODE, so here we take a simple example and try to solve that problem. So in next page, so if we take example and suppose let us solve the initial value problem, and this problem is suppose y1 dot, this is dot, is equals to minus 2 y1 minus y2 with initial condition is y1 0 is 1, and the second ODE equation is like this, where the initial condition is given that equals to 0. Okay, so here we this is the order differential equation, and this is the system of linear differential equation. So here we note that the above system of or above system can be rewritten as you write this y dot this equals to here this is the matrix coefficient which is a constant matrix. Okay, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैट्रिक्स अगर x के फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे, तो फिर नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम मेथड से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए हम एक क्लास में हम सिर्फ व्हेन a बी द सिंपल जैसे कोएफिशिएंट्स हमारे x के फॉर्म में हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो हियर इफ y डॉट इक्वल्स टू ay and y0 that equals to this condition is 1 0, so 1 0. Okay, so where and what is matrix a is this minus 2 minus 1 1 and minus 2, so this is your matrix A. Okay, so इसके बाद तो आपको मालूम ही है कैसे करना है, तो you have to find eigenvalues. So from this you have this the same lambda square minus, okay, so lambda plus 2 square, this becomes lambda plus 2 square, and this is minus plus 1, this is plus 1 equals to 0, so this implies lambda square plus 4 lambda plus 5 that equals to 0. So here okay, so this means here lambda with a complex root here. Okay, so here this is minus 4 plus minus root over 16 minus 20 by 2. So here lambda is okay, minus 2 plus minus I. So this is your eigen vectors lambda 1 and lambda 2. Okay, so for corresponding eigen vectors therefore the corresponding so we can write directly if we have a complex roots. Okay, so here therefore minus 2 plus I and minus 2 minus I, this are the eigenvalues of this matrix A, and so the solution is yx that equals to e ax y0. So here what is the exponential of that matrix A? Exponential of that matrix A is e to the power this real part is minus 2x, and the complex part is your plus minus 1, b is
B is 1 here. So B is 1, this means here cos bx, and this is sine bx, and this is sine bx cos x. Okay. So this is exponential of this matrix, and multiplied by what is the y0? Y0 is 1, 0. If you multiply this, so here e to the power minus 2x, and if you multiply here cos x, this is 0, and this is sin x. So this becomes cos x and sin x. Okay. So finally, your solution is what is yx is? Yx is this thing. Okay. तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपकी आइगन वैल्यूज हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स से होगा। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप शायद आपको समझ में ना आई हो, ये स्टेप हमने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, या क्लियर है? If this are eigen values means a plus minus bi, so here we can write this exponential of a is in this form, exponential of real part, and here cos of bx and minus sin bx cos bx. Okay, तो इस पोर्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप यहाँ पे इस चीज को यहाँ लिख सकते हो कि since if b is of this type, a minus b, b and a, if this type of matrix, look here. Okay, so lambda 1 item values are a plus minus ib. Okay, so here because this is a is negative 1, so here this type of solution. Okay, so then what is the e to the power bx, which is exponential of this, is equals to e to the power ax, this is the real part, and this is cos bx minus sin bx, this is sin bx, and here cos bx. So this is the exponential of that. Okay, so by this formula, we can write here, if this matrix, we can write directly, if this is a matrix, then what is the exponential of that? So we can write directly here, this is the a part, a equals to minus 2, so this becomes e to the power minus 2x, and here cos of what is b here, so b is 1 here, because if we calculate with this, b equals to 1. So here this cos of 1x, sine of 1x, and so on. We can write directly from this system to this step. If the matrix of type this, we know that this thing. Okay, so कैसे ये होगा तो हम आपको प्रूफ भी बता दें, क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट दें तो आप कह सकते हैं कि कैसा पॉसिबल है. Okay, so in next page, okay, and this solution is final solution is this yx equals to this thing. Okay, so this means okay, तो इस सोल्यूशन पे हम अभी बाद में आते हैं, इस सोल्यूशन पे भी हम बाद में आएंगे कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. ओके, पहले इस पोर्शन को, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्ट ये अप्लाई किया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले. ओके, सो नेक्स्ट पेज ओके, सो if okay, if our b be the matrix, which is suppose a minus b, here b and a, this is the matrix, and you have to prove that what is the exponential of that matrix. Okay, so this matrix can be written as the sum of two matrices, that is one is diagonal form, so 0 and a is a diagonal form. Okay, and plus this is 0 minus b, and a. So we can write this matrix b as suppose this is c and suppose this is a d. So here this matrix b equals to हेलो सर. c. हाँ बताएं.
सर डी वाली सर मैट्रिक्स में जहाँ मैट्रिक्स पे ए सेकंड लिखा हुआ है वहाँ पर 0 होगा। ओके ओके ओके, सही बात सही बात सही बात, ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। देखिए यही सब गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं ऑनलाइन में। कोई बात नहीं, ओके ठीक है। अब हमारे इतने सिंसियर स्टूडेंट्स हैं तो हमें अब उसकी फिक्र नहीं है। हमें मालूम है कि कहीं अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ तो आप लोग हमें जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ओके बढ़िया। दिस मैट्रिक्स बी, इफ इसको आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज ओके ठीक है। दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो व्हाट इज सी हियर, हम इधर अलग से भी लिखेंगे। सी मैट्रिक्स इज ए 0 0 ए, एंड व्हाट इज डी, डी इज 0 minus b, b and 0. These are the component of this matrices. Okay, so here we have to check that these matrices are commute or not, because we know that exponential of some a plus bx is not equals to a exponential of a into exponential of b. Okay, so वो चीज आपने देखा ही है, वो किस केस में होता है, if and only if these two matrices are commute to each other. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना होगा कि product of these two matrices C and D. Okay, so if you multiply this thing, and this is your C D. Okay, so this is 0 and this is 0, so this becomes 0 here, minus AB, and this is 0, so this becomes minus AB here, and if 0, okay, and here AB, so this term is AB. And if you multiply here, this is a 0 0, this is 0, so this is the value of CD. What about DC? If we try to find the value of this 0 minus B, B and 0, and multiply it by C, and C is A 0 0 A. If you multiply this, so here 0 0, so the first int is 0, here 0 minus AB, this is minus AB, here 0 0 AB, this is AB, and second one is 0, this is 0 0. Okay, so look this and this, so here this CD that equals to DC, so this implies these two matrices C and D are commute to each other. ओके, सो कॉम्पिटेटिव है, तो दिस मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल ऑफ बी एक्स, दिस इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ बी मीन्स सी प्लस डी दैट एक्स, एंड चूंकि ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं तो यू कैन राइट दिस सी एंड सी एक्स into dx. Okay, so here you can find what is the exponential of C matrix and what is the exponential of D matrix. Okay, and then product of these two. Okay, so what is the exponential of C? So here C is a diagonal matrix. Okay, so here what is Cx? This equals to here, this is diagonal matrix, so you know that this is e to the power ax 0 0 e to the power ax, or you can write this is e to the power ax if you take common. So the entries are 1 0 0 1. Okay, or you can write this with identity matrix I2. Okay, what about dx? Dx is so for dx, okay, तो dx के लिए दिस इज डायगोनल की तो बात ही नहीं, तो अब हम dx के लिए क्या करें, तो यूजुअल मेथड हमारे पास है दैट इज d, तो हम यहाँ थोड़ा रफ वर्क आप करें, सिंस d इज दिस थिंग, तो व्हाट अबाउट d स्क्वायर, सो d स्क्वायर इज 0 minus b, b 0 with 0 minus b, b 0, so this equals to first entry is minus b square, this is minus b square, and here this is 0, here 0, here minus b square. Okay, what about d cube? D cube is this d square and multiplied by d, so this becomes
this multiplied by matrix D. So this equals to, here this is 0, okay, and here this plus B cube, and here again plus B cube, and this is minus. This is 0 minus, this sign is minus, and this 0. Okay. What about d to the power 4? So d4 is 0. This is b cube minus b cube 0 multiply b minus b. This is 0 minus b 0. So product of this is b to the power 4. This is 0. B cube. This becomes 0 multiplied by this, and multiply here b to the power 4. Okay, so एक टर्म और निकाल लें. What is d की पावर 5? स्पेस है तो हम d की पावर 5 निकाल लेते हैं. तो b4 0 0 b पावर 4 और यहाँ हो गया 0b minus b0, if we multiply here, so this becomes 0 minus b5, here b to the power 5 and 0 and so on. Okay, और इस तरह से आप find कर सकते हो. Okay, so here we know that what is the exponential of this matrix E dx. So here this equals to basically identity matrix plus your dx plus d square x square factorial 2 d cube x cube factorial 3 and so on. Okay, so here what about if we put in here what is your d is this d square d cube d power 4 and d power 5. Okay, so in next page we या यही देखते हैं अगर स्पेस मिलती है. What about e to the power dx? E to the power dx is matrix. Okay, so here what identity matrix has first term is 1. Okay, and what is your d? D is 0. So if you multiply it by x here, this becomes 0 minus bx. So if you adding here, first term is 1. Okay, but dx term is here, this term is 0. तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, प्लस 0 हो जाएगा. d square में क्या है, that is minus b square. So here you can get minus b square and multiplied by this x square by factorial 2. Okay, then plus d cube. Here this d cube, this position is 0. So if you multiply it by x cube by this, that is 0. तो इसको आप छोड़ दें. d की पावर 4 में आ जाए यहाँ, तो आ गया b की पावर 4 x की पावर 4 by factorial 4 प्लस माइनस देखते हैं क्या है, 5 में यहाँ 0 हो गया. ओके, तो 6 एंड सो ऑन, इस तरह से आपका होता जाएगा. 6 में होगा क्या बेसिकली, अगर आप सिमेट्री देखें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर में डायगोनलिटी 2 है, 4 में क्या है मेरे पास 4 है, बट ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके, फिर होंगे माइनस. अगर आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर लें, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं. दिस इज 6 0 0 बी टू द पावर -6. ओके, तो ये आपके होंगे. तो यहाँ पे दिस टर्म इज बी टू द पावर 6 x टू पावर 6 फैक्टोरियल 6. ओके, तो ये हो गया आपके फर्स्ट टर्म एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें नीचे वाला टर्म क्या होगा, तो इस पोजीशन पे देखें हम, तो यहाँ आइडेंटिटी टर्म है, दैट इज दिस पोजीशन है 0. ओके, तो फर्स्ट वन इज 0. देन यहाँ x के साथ d में क्या है, d इज b, तो यह सिंपली bx. This term is starting from this is bx. Okay, bx. Then d square minus नो सर ठीक है. ठीक कहीं होगा प्लस माइनस, तो आप हमें बता दीजिएगा. ओके, बता दीजिएगा, हो सकता है कि कुछ मिस हो जाए. तो dx है, d is here b. Okay, so this is bx. Then d square में this position is 0, तो कोई मतलब नहीं है. d cube में आ जाएगा माइनस b cube. ओके,
So here minus b cube and x cube over factorial 3. And then next one is 4 में 0 हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस पोजिशन इज प्लस, एंड b to the power 5 x to the power 5 by factorial 5 and so on. Okay, तो आप समझ रहे हैं क्या है, आप उसको ठीक से क्लियर लिख लें। तो ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम हम इसे कर लेंगे। उसी तरह से आप क्या करोगे, इस इंट्री को भी आप लिख लोगे, इस इंट्री को भी लिख लोगे, एंड दिस इज योर बेसिकली मैट्रिक्स। ओके, तो आप देख लें ये बिल्कुल सिमिलर ही होगा, क्योंकि इस पोजीशन पे जाओगे तो सिर्फ ये क्या है, माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ माइनस बी हो जा रहा है, यहाँ बी क्यू हो जा रहा है, जो आपने ये लिखा है बस उसका माइनस साइन, तो माइनस ऑफ दिस पोजीशन हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे अगर आप आए, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे इस पोजीशन में देखिए बिल्कुल सेम है, बी स्क्वायर है, बी की पावर 4 है, तो यहाँ बिल्कुल यही टर्म होगा, बिल्कुल सेम टर्म होगा, यहाँ सेम होगा, बट इस पोजीशन पे देखिए क्या होगा, माइनस साइन होगा, ड्यू टू दिस पोजीशन है, माइनस का अंतर है। ओके, तो दिस इज माइनस, आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। ओके, ये एक्सपेंशन आपको मालूम है, दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ये किसका एक्सपेंशन है, दिस एक्सपेंशन इज cos bx। अगर आपने एक्सपेंशन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ा हो क्लास 12th में, तो उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी कि व्हाट इज द cos bx, जैसे एक्सपोनेंशियल का आपको मालूम है, cos, एंड दिस फॉर एक्सपेंशन sin bx। ओके, सो दिस मींस अगर आप ये इसको आप एक्सपेंशन देखें, दिस इज cos bx है, दिस इज माइनस साइन के साथ यहाँ पे sin bx हो जाएगा, और यहाँ पे सेम ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे cos bx होगा। तो फाइनली जो आपके एक्सपोनेंशियल, फाइनली अगर हम देखें तो e टू द पावर dx जो होगा, दैट dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो cos x, यहाँ लिख सकते हो cos bx, यहाँ लिखेंगे आप sin bx, यहाँ है माइनस साइन bx, यहाँ है cos x। ओके, दिस इज योर dx। What about exponential bx? So bx is cx multiplied by that. And what is your cx? Cx is e to the power ax, identity matrix. And identity matrix multiplied by that matrix. So this is equals to same. So this becomes e to the power bx. That is simply e to the power ax. And if you multiply here identity with this dx, so this is cos bx sin bx sin bx cos bx। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपकी मैट्रिक्स इस तरह की है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन आप इस फॉर्म में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका डेरिवेशन अगर पूछी जाए आपसे, या नहीं आपको मालूम होना चाहिए कैसे डेरिवेशन करना है, तो आपका ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, यहाँ पे करना है। हाँ, बस एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि CD आपको ये दिखाना होगा कि CD हमारी कॉमिट कर रहे हैं, तभी ये स्टेप आपका वैलिड है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इसी तरह से एक और छोटा सा मैट्रिक्स है, उसको भी हम डायरेक्ट लिखते हैं, उसको भी हम यही कर दें क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 8 मिनट्स है, तो हम एक मैट्रिक्स और फॉर्म लेते हैं, उसके भी डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा जाता है, उसको भी देख लें, शायद काम आए आपके। तो नेक्स्ट पेज पे हम उसे लिखते हैं। सो इफ बी, अगर इस तरह की मैट्रिक्स हो, सपोज डायगोनल एंट्री सेम और यहाँ इस तरह की मैट्रिक्स है, दिस इज डिफरेंट। ओके, तो इस मैट्रिक्स में अगर ऐसी है, सो आपका एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स जो होगी, दैट इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू e to the power ax due to this diagonal entry, and here this matrix is 1 x 0 1। ओके, तो ये चीज होती है, तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रूफ इसकी कैसे है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही हम करेंगे कि हियर दिस मैट्रिक्स B, और ये ट्रिक आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आर्बिट्रेरी ABCD पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम कम्यूट करें ना करें ये जरूरी नहीं है, तो वो वैल्यू सेम होती नहीं। तो इसलिए आप आर्बिट्रेरी ABCD एंट्री अगर हम ले लें ABCD, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी वहाँ। तो इफ B इक्वल्स टू दिस थिंग एंड दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, बिल्कुल उसी फॉर्म में आप लिख लें,
ये सी मैट्रिक्स हो गई और यहाँ आपकी डी मैट्रिक्स हो गई. This matrix is C, this matrix is D. Okay, so if we try to check what is the product of CD, CD is A0, 0, A multiplied by D, 0, 1, 0, 0. So this equals to 0, A, 0, 0. Okay, and what about DC? So here 0, 1, 0, 0, and C is this thing. And if you put it of this is 0, E, 0, 0. Okay, so this means these two matrices क्या है, C and D जो है, this C and D commute कर रहे हैं. Okay, so this means you can write directly what is exponential of that is equals to C plus D, and is equals to Cx multiplied by dx. Okay, and what is a Cx? To e to the power Cx exponential of C. So you अभी आपने निकाला है, तो this becomes e to the power ax identity matrix अभी आपने जो सॉल्व किया. What about D? तो D के लिए आपको देखना होगा कि e to the power dx, e to the power dx that equals to identity plus dx d square total 2 t cube. सर एक क्वेश्चन था. लो. हाँ बताएं. सर इनका कंप्लीट होना जरूरी है, सी और डी का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने आपको कराया है. आप शायद वो क्लास याद नहीं होगी या फिर आप मिस कर गए होगे. ये तो हमने दिखाया था कि दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू. पता नहीं आपने वो क्लास की थी या नहीं की थी, बट मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वो क्लास अटेंड की थी, जिसमें हमने दिखाया था क्लियरली कि क्यों ये कंडीशन मस्ट है. ओके, तो आप देख लें, नहीं होगा तो फिर आप बच्चों से कांटेक्ट कर लें. फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो करा देंगे, लेकिन अभी चूंकि कोर्स अभी आपका बहुत लेंदी है, कम से कम अभी 20 लेक्चर्स चाहिए भी ना, तो किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे. और अगर आप सभी फ्री हो तो हम नेक्स्ट वीक से हम थर्सडे की क्लास हम असाइन कर लें आपकी, अगर सबकी सहमति हो तो. अदरवाइज फिर देखते हैं. ठीक है, संडे मंडे सर थर्सडे हमारे प्रोबेबिलिटी की क्लास होगा अब से 10 बजे से 10 मॉर्निंग. यस सर. क्या है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए हम उसको जीपीएस बाद में सर मैनेज का करेंगे. प्रोबेबिलिटी. ओके जीपी सिंह का, ठीक है. ठीक, कोई बात नहीं. अभी तो हमारी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो क्लास हो ही रही है, हम बाद में देखते हैं जैसा होगा. जैसा होगा, नहीं तो हम हो जाएगी कोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5 फरवरी तक आपकी क्लासेस चलनी है. ओके, तो 1 महीने और क्लास चलनी है. 1 महीने में हमें सिर्फ 12 लेक्चर ही मिलेंगे, लेकिन कोर्स आपके लगभग 20 लेक्चर्स के भी हैं. ठीक है, हम उसको हम उसको मैनेज कर लेंगे. ओके, चलिए. तो D equals to this thing. So what is identity matrix? So identity matrix is this thing. So X and D is 0, A, 0, 0. This is D. X square by factorial 2. What about D square? No. What is D? D is 1 here. Okay. This position is 1. Okay, well, this is 1. What about D square? D square is 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. If you multiply this, so 0, and here this is 0, here 0, 0. So this is null matrix. So here this is okay, and आगे भी multiply करते जाओ तो that becomes 0. So this is equals to 1, 0, 0, 1, and this is 0x 0, 0. This equals to 1x 0, 1. Okay, this is e dx. So what about e to the power bx is identity matrix into this one. This equals to 1x 0, 1. Okay, so this is the solution. तो इस तरह की अगर मैट्रिक्स हो तो आप डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल आप ये लिख सकते हो. ये आपके फॉर्मूले हैं सारे. तो ये भी आप कर लें. ठीक है, तो ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं. और नेक्स्ट टर्म पे हम जो सोल्यूशन है जो आपने अभी उसमें भी आपने सोल्यूशन निकाला, एंड दैट सोल्यूशन इज yx, जो भी प्रॉब्लम आपको हमने दी थी सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आपने ये सोल्यूशन आपने फाइनली निकाला कि दैट इज -2x. हियर दिस a is -2x,
minus 2x, and this is the solution of your initial value problem. Okay, तो ये आपने फाइनली सोल्यूशन निकाला है. तो नेक्स्ट पेज पे हम ये चीज डिस्कस करते हैं. ये चीज हम 2 मिनट है अभी हमारे पास, तो हम 2 मिनट में हम आपको बता देते हैं. तो नेक्स्ट पेज. ओके, तो द इन सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो कि अभी आपने निकाला, दैट इज yx, दैट सोल्यूशन इज e to the power minus 2x, and here cos x and sin x. Okay, so इस केस में what is the consequences of this result? So in short हम यहाँ बता देते हैं, बाकी डिटेल हम नेक्स्ट टर्म पे हम करेंगे. First one is what about the mod x? Okay, so this solution is e to the power minus x cos x, and second vector is e to the power minus 2x sin x. What is the modulus of that? This is square plus this is square root over that. So cos square sin square, that becomes 1. So this is the value. This is e to the power minus 2x, and that tends to 0 when x tends to infinity. Okay, and what about second? What is the angle? So this is the tan inverse y by y2 by y1. So this equals to y2 by y1 tan inverse. So this becomes tan x. So this becomes simply x. Okay, and third, what is the parametrically this vector? What is the solution? That is y1 and y2. This vector. So this basically transpose. Basically, this describes a curve in R2, which is basically spiral due to these two conditions into origin. Okay, so that is the graphical representation. The solution is basically this. सर विच के बाद क्या लिखे? पैरामेट्रिक, यहाँ पे पैरामेट्रिकली नो तो नीचे विच इज कहाँ पे हो? कहाँ कर रहे हैं? Spiral. This is spiral. Okay, so this is the parametric solution of your this. Okay, this is your origin. तो ये अभी तक तो हम सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस पे आ रहे थे. अब वो ज्योमेट्रिकली उसके ग्राफ सॉल्यूशन कैसे दिखेंगे, ये चीज जो है हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टर्म पे हम जो स्टार्ट करेंगे, दैट इज फेज पोर्ट्रेट इन R2. आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे दिखेंगे, क्या होंगे, वो किस तरह का नेचर होगा वो. ठीक है, ये सारी चीजें हम अब नेक्स्ट टर्म से हम उधर जा रहे हैं. ठीक है, तो आपके टाइम हो गए हैं, आप अपनी क्लास करें. इस चीज को हम सारी चीज को क्या सर एक बार प्रीवियस पेज खोल दीजिए. प्रीवियस पेज चले जाए. जी सर. ठीक है, तो ये क्लियर है. ओके, ठीक है, तो आपकी क्लास इतनी ही है. आप अपनी क्लास नेक्स्ट क्लास करें, और हम नेक्स्ट टाइम पे फिर हम इसे यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे इसको. ठीक है. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू थैंक यू सर. थैंक यू टू ऑल.